Hello friends, welcome to our new video. Let's try to solve the today's problem. The today's problem is friends or not. Okay, before that, if you are watching our video for the first time or if you did not subscribe our channel yet, then please go and subscribe our channel and hit the bell icon as well so that you can get the notifications of our new videos. Okay, so let's see the problem statement. Okay, here you can see that we have given a problem statement. The problem statement is the student of Newton School threw a grand party to celebrate their hard work and achievements. They danced and sang the night away, enjoying delicious food and creating memories that would last a lifetime. Okay, so there are n guests in the party and n minus one relationships are given. Okay, so the guests are numbered 1 2 up to n. Okay, and the ith relationship depicts that the guest AI and the guest BI are friends. Okay, so we have to determine whether a guest exists or not, who is a friend of all other guests. Okay, here we only consider the direct friendship. Okay, so in the input we have given in this format. Okay, so and we have to find the guest present in the party, that is who is friends of all others. Okay, so if the guest exists or who is a friend of all other guests, so we have to print S. Okay, else we have to print no. Okay, so in this problem, what we can do, we have to find out the guest which is friend of all other guests. Okay, so in this problem, we have given the n guests and there are a relationship given, okay, which is n minus 1. Okay, so in this problem, it has mentioned there is given a relationship. Okay, so here uh, we are going to use the trees approach in this problem. Okay, which shows the relationship between each other. Okay, so uh, like this, suppose this is the guest. Okay, and uh, these are the other guests. Okay, so we have to find, suppose this is the guest. Okay, so we have to find that this guest is friend of all other these guests. We have to find. Okay, so हमको क्या करना है इस प्रॉब्लम में, ये जो गेस्ट है वो फाइंड करना है कि वो इन सब गेस्ट का फ्रेंड है क्या. ओके, अगर है तो हमको यस प्रिंट करना है. ओके, नहीं तो नो प्रिंट करना है सिंपली. ओके, so let's try to understand the logic to solve this problem. Okay, so okay, so what we can do, let's suppose this is the guest. Okay, and uh, these are the other guests which is present in the party. Okay, okay, so we have to find the one guest which is a common guest, which is the friend of all other guests. Suppose this is the guest and this is the friend to all other guests. Okay, if like this the guest is present in the party, we have to print yes. Okay, so uh, here this is the what we can say, this is a tree approach. Okay, so let's understand this. Okay, so let's suppose these are the nodes. Okay, these are the nodes and these are the edges. Okay, so uh, let's suppose this is 7, this is 6, this is 5, 4, 3, 2. Okay, and this is 1. Okay, so these are the nodes. Okay, how many nodes are there? Total 7. Okay, which is nodes equal to 7. Okay, and how many edges are present? That is
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so edges are 6 edges are there. Okay, so 7, 1. Okay, 7, 1, 6, 7, 1, then 1, 6, 1, 6. Okay, then 1, 5, 1, 5, then 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, and 1, 2. Okay, these are the edges. Okay, that are the edges. Okay, and in these edges, what we can see, there are one common node present. Okay, in this all edges, which is this one. This one is present in all the edges. Okay, so this is a common node in all the edges. Okay, in this example, the common guest is present, so we have to print yes in such kind of scenarios. Okay, and if we can't find any common guest in the party, or if we can't find the common node in the edges which we have given, then we have to print no. Okay, so this is the logic for this problem. Okay, so let's see our question. Okay, so here you can see that we have given some sample input and output. Okay, so these are the total number of guests. Okay, these are the n guests present in the party. Okay, and these are the uh, guests in which is present in the party. Okay, so let's try to draw this sample input. Okay, first, okay, so first is 1. Okay, let's suppose this is one node, that is 1, which is connected to 4. Okay, let's suppose this is 4. Okay, then the second is 2 and 4. Okay, so this 4 is connected to this 2, 2 and 4, then 3 and 4. Okay, then this 4 is connected to this 3. Okay, then 4 and 5. Okay, this 4 and this 5. Okay, so in this sample input we can see that the 4 is common guest which is present, which is friend of all other this all other guests. ये जो 4 है वो जो बाकी के सब गेस्ट है उन सबका फ्रेंड है. ओके, सो दिस इज द कॉमन गेस्ट. Okay, so that's why we have to print yes in this in uh, in such kind of scenarios. Okay, this is the first sample input. Okay, let's see the second sample input. Okay, so this is the second sample input. Okay, so these are the n guests present in the party. Okay, so let's try to draw this. So this 2 is connected to 4. Okay, then 1 is connected to 4. Okay, so this 1 is connected to 4, and then 2 and 3. Okay, so then this 2 is 3 connected to 3. Okay, so in this sample input, the uh, देयर इज नो कॉमन गेस्ट. ओके, यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉमन गेस्ट प्रेजेंट नहीं है जो कि सब गेस्ट मतलब सबका फ्रेंड हो. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 जो है वो 2 का फ्रेंड है, देन 1 का भी फ्रेंड है, बट 3 का फ्रेंड नहीं है. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे सिनेरियो में हमें नो प्रिंट करना है. ओके, ओके, सो yeah, okay, so let's see for the third sample input. Okay, थर्ड सैंपल इनपुट में देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ गेट्स दिए हैं. ओके, इसमें देख सकते हैं कि हमको एक कॉमन गेस्ट दिख रहा है विच इज 10, जो सबका फ्रेंड है. ओके, सो इन सच केसेस वी हैव टू प्रिंट यस.
Okay, so this is the logic for this problem. Okay, so let's uh, understand the code first. Okay, so uh, how we can solve this problem, let's try to understand this first. Okay, so first what we can do, uh, ओके यहाँ पे देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्या करेंगे, हम एन यूजर से इनपुट लेंगे एक नंबर. ओके, देन हम क्या करेंगे, ये जो गेस्ट्स है, ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो एरेज लेंगे. ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे दो एरे ए एंड बी, लेट्स सपोज कोई भी नाम देख सकते हैं, ए एंड बी करके दो एरेज लेंगे. ओके, देन क्या करेंगे हम, ये दो दो एरेज है, इन दो एरेज के इनपुट भी लेंगे हम यूजर से. ओके, सो उसके लिए हम फॉर लूप में क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे. ओके, एरे ऑफ आई एंड बी ऑफ आई. ओके, ये दो नंबर्स हैं, एरे एलिमेंट्स के यूजर से इनपुट लेंगे. ओके, देन हम क्या करेंगे, और यहाँ पे और एक एरे डिक्लेयर करेंगे, और लेट सपोज गेस्ट करके एरे लेंगे. ओके, एंड इस एरे में क्या करेंगे हम, जो ये एरे है इसका साइज क्या करेंगे हम n+1 ये कर देंगे. ओके, देन सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे. ओके, ओके, एंड इस फॉर लूप में क्या करेंगे हम, जो एरे है गेस्ट गेस्ट एरे में क्या करेंगे, जो गेस्ट एरे. ओके, सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एरे है अपना, दैट इज ए. ओके, ए ऑफ आई, एरे एलिमेंट्स जो है फर्स्ट एरे में उसको इंक्रीमेंट कर देंगे. ओके, 1 से. ओके, प्लस प्लस करेंगे. देन हम क्या करेंगे, जो अपना सेकेंड एरे है विच इज बी, उसको भी क्या करेंगे हम, उसको भी इंक्रीमेंट कर देंगे. ओके, देन व्हाट वी कैन डू, करने के बाद एक लेट सपोज स्ट्रिंग हम लेंगे आंसर करके, और उसको इनिशियली हम क्या करेंगे, नो से इनिशियलाइज कर देंगे. ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, एक फॉर लूप चलाएंगे हम. ओके, जो अपना ये है गेस्ट एरे. ओके, सो यहाँ पे इस फॉर लूप में हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 1, देन i इज लेस देन n+1, i प्लस प्लस. ओके, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे, दैट इज इफ जो अपना गेस्ट एरे है, गेस्ट एरे ऑफ आई इक्वल्स टू n-1. ओके, इफ दिस इज ट्रू, देन हम क्या करेंगे, आंसर को यस कर देंगे. ओके, एंड और इस फॉर लूप के बाहर सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आंसर को. ओके, सो we have to do we have to solve this problem like this. Okay, or else what we can do, there is another way as well. Okay, so what we can do, the second way, यहाँ पे क्या करेंगे, एक n यूजर से इनपुट लेंगे. ओके, देन हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे जिसकी साइज होगी n+1. ओके, देन हम क्या करेंगे, ए फॉर लूप चलाएंगे. ओके, इसमें हम दो नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे. ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, x एंड y को यूजर से इनपुट कराएंगे इस एरे के, इस फॉर लूप के अंदर. ओके, एंड देन क्या करेंगे हम, इसी फॉर लूप में हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है x एंड y उसको इंक्रीमेंट करेंगे 1 से. देन x एंड y जो है उसको इंक्रीमेंट करेंगे. ओके, आफ्टर दैट
हम क्या करेंगे, यहीं पे एक कंडीशन लिखेंगे सिंपली यहाँ पे, दैट इज इफ array of I equals to n minus 1, or array of sorry, not array of I, array of x and array of y equals to n minus 1. Okay, if this is true, then simply हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे yes. ओके ओके, यस प्रिंट कर देंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे. ओके, एंड इस फॉर लूप के बाहर सिंपली हम क्या करें, नो को प्रिंट कर देंगे, नो को प्रिंट कर देंगे. This is the second way to solve this problem. Okay, so let's try to write the code for this problem. Okay, so what we can do first, here I will write the scanner class to take the input from the user. Okay, so I'll write scanner sc equals to new scanner, then system dot in. Okay, then एक नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे, लेट्स सपोज n sc dot next int. Okay, then what we can do, एक array लेंगे, let's suppose guest equals to new int, and इसके अंदर इसकी साइज पास कर देंगे n plus 1. Okay, then simply एक for loop लिखेंगे, and inside this for loop what we can do, we'll write integer I equals to 1, then I is less than n, I plus plus. Okay, and inside this for loop simply हम क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे, that is integer x equals to sc dot next int and integer y equals to sc dot next int. ओके, ये दो नंबर हमने यूजर से इनपुट लिया. ओके, ये जो है, ये नंबर्स हम यूजर से इनपुट लिया, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड नंबर, ये नंबर्स यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे हमने ये दो वेरिएबल्स में ये नंबर्स को स्टोर कर दिया. ओके, देन अभी क्या करेंगे हम, ये जो एलिमेंट्स है उसको एरे में ये करेंगे और उसको इंक्रीमेंट कर देंगे. सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अपना एरे है गेस्ट ऑफ एक्स और उसको इंक्रीमेंट कर देंगे. सो प्लस प्लस लिख देंगे, देन गेस्ट ऑफ वाई, देन इसको इंक्रीमेंट कर देंगे. ओके, प्लस प्लस. नाउ इंक्रीमेंट करने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी चेक करना है कि जो एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स ये जो है एलिमेंट्स जो एजेस है या फिर ये जो गेस्ट्स है, तो इसमें चेक करना है कि हमें जो ए है एक्स गेस्ट एंड ए है वाई गेस्ट. ओके, सो एक्स गेस्ट और वाई गेस्ट में हमें अभी चेक करना है कि कोई कॉमन एलिमेंट है क्या. ओके, सो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, दैट इज इफ array of x is equals to n minus 1. Okay, so ओके, सो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि जो कोई मतलब ये जो एक्स एंड वाई है इसमें ये जो एक्स एंड वाई है वो इक्वल्स टू है क्या n माइनस 1 से. ओके, एक्स के लिए लिखा हमने, देन हम क्या करेंगे, एरे ऑफ वाई इक्वल्स टू n माइनस 1. ओके ओके, सो नाउ हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी कि इफ array of x is equals to n minus 1 or array of y equals to n minus 1. Okay, and if this is true, then simply we are going to print yes. Okay, so we'll simply write system.out.println
inside this simply what we can do, we'll print yes. Okay, and we are going to return this. Okay, so now and outside this for loop simply हम क्या करेंगे, नो को प्रिंट कर देंगे. Okay, so this is the code for this problem. Okay, so here we have made one mistake that our array name is guest, so I will amend it to guest. Okay, now let's try to run this code. So simply I'll copy this input, let's paste it in the input, click on run. Okay, output, okay, you can see that output is s, output is yes. Let's see for the second sample input, so I'll copy this, let's paste it, click on run. For this output should be no. Okay, you can see that output is no. Let's see for this third sample input, so I'll copy this, let's paste it, click on run. For this output should be yes. Okay, you can see that output is yes. Okay, so now our all the sample inputs are showing correct output. Now let's try to submit the code and let's see whether all the test cases will pass or not. So click on submit. Okay, so you can see that all the test cases has been passed. Okay, so this is the code for this problem. Okay, so that's it in this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.